Hello बच्चों, let's read this question. Three beakers labeled as A, B and C were taken, each containing 15 ml of water. A small amount of NaOH, anhydrous copper sulfate and NaCl were added to the beaker A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B, whereas in case of beaker C the temperature of the solution falls. Which statement is are correct? So हमारे पास ये statement given है. First statement says in beaker A and B exothermic process has occurred. Second says in beaker B and C endothermic process has occurred. Third says in beaker C the exothermic process has occurred, and fourth says in beaker C endothermic process has occurred. And A, B, C, D are the following options given to us. So let us discuss first इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा. The key concept of this question is exothermic and endothermic process. It is exothermic and endothermic process. First we will see जो हमारे पास exothermic process होता है. Exothermic process. Exothermic वो process होता है जिसमें heat is released. So we can write when heat is released. And जो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इट इज द प्रोसेस जिसके अंदर जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है. हियर वी कैन राइट हीट इज एब्जॉर्ब्ड. लेट अस कंसीडर द एग्जांपल. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेट अस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो डिकम्पोज होता है इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. along with this heat is released. So in this reaction we can see जो heat है वो release हुई है, hence it is the exothermic process. And for endothermic process we can consider the example for the formation of nitric oxide जिसमें नाइट्रोजन गैस जो है रिएक्ट करती है with the oxygen and heat required होती है, heat absorb होगी and it will lead to the formation of the NO, that is the nitric oxide gas. So this is the example for the endothermic process. According to the given question हमारे पास तीन beaker है A, B and C and three of the beaker contains the 15 ml water. Let us say तीन beaker है जिसमें हमारे पास 15 ml water present है A, B and C. And according to the given question small amount of NaOH anhydrous copper sulfate और NaCl ऐड किया गया है. So here we can write NaOH anhydrous copper sulfate and NaCl ऐड किया है in the C beaker. Now according to the given question it was observed कि increase हुआ है temperature for the A and B के लिए, but जो beaker C है उसका temperature fall हुआ है. So A and B में जो temperature है that got increased and C के लिए fall हुआ है. Now let us write the reaction first for the same. जो हमारे पास beaker A है, for beaker A NaOH जो है वाटर के साथ रिएक्ट किया है. इन दिस जो हमारे पास Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस फॉर्म हो जाएंगे वाटर में एंड हीट रिलीज होगी हेंस दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. Exothermic process. Now let us see for the beaker B जो हमारे पास beaker B है. In this copper sulfate ऐड किया गया है in the water and it will lead to the formation of the
copper sulfate dot 5H2O. along with this heat will be released. सो हमारे पास ये था एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रस कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा एंड हीट रिलीज हुई है. सो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस. नाउ लेट अस सी फॉर द बीकर. सी जो है हमारे पास इन दिस जो NaCl है वाटर में जब ऐड हुआ है देन हीट एब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन और Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के आयंस प्रेजेंट है इन द वाटर. सो हीट एब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सो वी कैन से इट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो जो हमारे पास बीकर ए एंड बी है एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है मींस हीट रिलीज हुई है ड्यू टू विच जो बीकर है वो गर्म हुआ है और वी कैन से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बीकर का. बट ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है जिसमें हीट पहले एब्जॉर्ब हुआ था देन जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ देन जो हमारे पास बीकर होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा. सो बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट है विच सेज ए एंड बी जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. सो दिस इज द करेक्ट वन. इन बीकर बी एंड सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है. दिस इज रॉन्ग बिकॉज बीकर बी में तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है. इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड बट बीकर सी में तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है. सो दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन जो हमारे पास स्टेटमेंट 4 है इट इज इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड. सो दिस इज द करेक्ट. बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी. स्टेटमेंट जो फर्स्ट एंड फोर्थ है these are the correct one. Let us mark the option C as the correct answer and A, B and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.